મને ને હોપ કરતા જવું હોય કે એને ડગાડતા. ઓ નો, એ કેવા એમને એમ સીધા ઊભીને આપણે જોવેરા. હા, કોણ ખંજોરે? શું ખંજોરેરો? ઓ જો ખંજોરેરો, એકદમ ખંજોરેરો. હા, આઈ થિંક હવે ગરમી એટલે એને ખંજોર આવી રહેલું. ગરમી થઈ ગઈ હવે. ગરમી ખંજોરો એ લોકોને, મને ગરમી કેંગરૂને ગરમી. એને ઓલું ખપે ડોર્મિકુલ. એમ મોસમ ઠંડે ઠંડે ડોર્મિકુલ કા. આ જો અહીંયાથી દેખાય રાજો. આયરું જો, આયરું હામે શિવની. ઇસ હામે આયરું ટીટકુરું. એક આયરું, એક આયરું, એક આયરું, ચોથું આયરું. કેવો બિંદી કાંઈક કરતા લોકો આ મૂવ થાય. મૂવ જ એટલે મને જોઈને મૂવ થઈ જવા જોઈએ પણ. Beautiful sun is setting. Guys, let's continue our walk. Central Coast के खाली खाली रास्ते. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? वेलकम टू द वीडियो गाइस. और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे. आप कैन यू गेस व्हाट वी आर मेकिंग बाय सीइंग ऑल दिस वेजिटेबल्स? एज यूजुअल हम लोग वेजीज ज़्यादा ही डालते हैं सब कुछ में. एंड यहाँ पे मैंने टमाटर का वघार किया है. हम लोग बना रहे इडली सांबार. सो दिस इज़ द सांबार फॉर इडली. एंड यू कैन सी आई हैव डन द टोमेटो नो वघार. उसके अंदर सारे आपके मनपसंद के वेजीज, आप लोग को जो भी अच्छा लगता है यू कैन जस्ट ऐड इन टू इट. और यहाँ पे एक साइड दाल हमारे उबाल के रखी है विच इज़ द तूर दाल नॉर्मल वन. आपके वेजीज थोड़े थोड़े से पक जाए सो यू कैन ऐड दिस दाल इन टू इट. एंड हम लोग को सांबार बहुत ही अच्छा लगता है सो वी मेक इट लाइक सो मच वेजीज एंड स्टफ. एंड देन आई एडेड सम दाना, जीरू, सॉल्ट और कुछ नहीं डाला है. एंड गाइज दिस इज़ द सांबर मसाला जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारा इडली सांबर के लिए. सो इट इज़ एक्चुअली रियली नाइस. ये अदू काला का सांबर मसाला. एंड एक्चुअली दिस इज़ स्पाइसी वन. ओके, सो आई हैव नॉट एडेड चिलीज़ बिफोर क्योंकि ये सांबर मसाला ही स्पाइसी है तो आप लोग अपने हिसाब से डाल दो. एंड दिस इज़ ड्रम स्टिक्स जो हमारा वो सरगो होता है वो भी उबाल के लास्टली वी हैव पुट इट. And finally our नींबू का रस. And that is it. Our sambar is ready to so easy and so tasty. आप लोग सब प्लीज़ ये बनाओ. Like I don't know if how you make it but anyways yeah, so this is ready. थोड़ा टाइम उबलेगा और ये रेडी हो जाएगा. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा घर का बनाया हुआ इडली का बैटर भी रेडी है. ये बहुत ही अच्छा बन गया था इडली का बैटर. आई थिंक आई गिव यू ऑल द रेसिपी बिकॉज इट वॉज सो नाइस एंड फ्लफी. द इडलीज वॉज सो सॉफ्ट. तो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक होम मेड इडलीज यू कैन मेक देम. एंड यू कैन सी इट्स ऑलरेडी. यहाँ पे अभी हम लोग स्टीम करने के लिए रख देंगे. और यहाँ पे हमेशा हम लोग जुगाड़ यूज़ करते हैं. इफ़ यू डोंट हैव द स्टीमर जस्ट यूज़ द प्रेशर कुकर एंड यू कैन डू इट. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दे आर ऑल स्टीम्ड. एंड आई जस्ट लव इडली सो मच. और यहाँ पे यू कैन सी दिस इडली जो पीछे वाली जो है ना वो सोजी की इडली है जो मसाले वाली. एंड देयर आर सम प्लेन वंस. एंड लाइक एज यूजुअल हम लोग इडली सांभर बना के हम लोग पार्क में लाए थे. सो ऐसे छोटे मोटे पार्क्स बहुत ही होते हैं सेंट्रल कोस्ट में आजू बाजू. सो वी रियली प्रीफर जस्ट गोइंग आउट विद आवर फूड एंड जस्ट सिट देयर रिलैक्स. थोड़ी सी फ्रेश एयर हो जाती है. एंड यहाँ हम लोग ऐसा तो वीक में 1-2 बार तो हम लोग कर ही लेते हैं बिकॉज इट्स रियली नाइस एंड एवरीवन एंजॉय सो मच इन द फ्रेश एयर. Shouldn't you like it? And that was a beautiful time we had at the picnic spot with our idli sambar. यहाँ पे guys I'm having watermelon. इतने छोटे छोटे cute से थे and I love fruits. Oh my god. And yeah, finally our नाश्तो is starting. नाश्तो मतलब थोड़ा सा किया था. और ये घर के बनाए हुए बिस्किट्स ना हमको बहुत याद आता है. Like mummy and काकी and भाभी and everyone used to make it at home. जब हम लोग छोटे थे ऐसे flowers वाले इलायची वाले घर के biscuits. So we were just making that with this gun and yeah, they turned out to be so good.
और बिस्किट्स होने के बाद गाइस उसके साथ साथ हम लोग ने थोड़े से छोटे छोटे कपकेक्स भी बना लिए. सो दिस मिनी कपकेक्स आर सो क्यूट, लाइक दे नॉट दैट मिनी, दे आर लाइक मीडियम, सो इट्स परफेक्ट साइज. वो बड़े बड़े हमको यू नो देन इट्स लाइक इट्स सो बिग. सो दिस वंस आर गुड एंड इसकी रेसिपीज़ भी मैंने ऑलरेडी दे दी है पहले, सो आई कॉन्ट कीप रिपीटिंग द रेसिपीज ऑल द टाइम. सो प्लीज़ जस्ट check my previous videos if you want the recipes for these cupcakes and everything. And yeah, they always turn out so good. And finally guys, we are making the cold cake, and this is crushed biscuits. Here that I've put cocoa and everything, and these are the crushed nuts as well. So this is the Hirak's the favorite food, and यहाँ पे कुछ नहीं करना है, butter melt करना होता है. Then you just add your golden syrup and then you add your crushed biscuits and cocoa powder and the nuts and everything. और फिर आप लोग ये mix कर दो until it is like लिटिल बिट मॉइस्ट, कि आप लोग उसको प्रेस कर पाओ. फिर आप हम लोग ऐसे बर्फ़ी मोहनथाल ऐसे प्रेस करते हैं ना, जस्ट प्रेस इट आउट इन द ट्रे. और आप लोग ये बोल भी यूज़ कर सकते हो जस्ट टू प्रेस इट डाउन. एंड फॉर द एजेस यू कैन यूज़ एनी फ्लैट स्पैचुला, और हमारा चावी था कुछ भी होता है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आई ऑलरेडी कट इट इनटू पीसेस. व्हेनेवर इट इज़ लिटिल बिट सॉफ्ट यू जस्ट कट इट इनटू स्क्वायर्स, तो उससे क्या होगा वो बाद में निकल जाएगा. और यहाँ पे डिनर में जीजू बना रहे, क्या बना रहे जीजू, मटका में खारी भात बना रहे. यम, वी लव वगैरह भात इन द मटका. और yeah, look at all our nasto is ready guys, look at all those things. Oh my god, Hirak is gonna love it. And this is the cold cake जो cool हो रहा है, और it is finally ready. You can see हमने पहले से ऐसे pieces किए थे, so अच्छी तरह से निकल गया. And this is Hirak's the favorite food, he loves this so much. And ये बहुत ही अच्छा बनता है and बहुत ही ज़्यादा easy है, so you all can make it also. It's very easy to make, okay? अभी है वॉशरूम के बाहर. Guys, we've come to city, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ काम वाम करके हम लोग जाएंगे हमारे भाई को लेने के लिए. I'm so excited he's coming. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो गाइस. हम लोग आए सिटी में, यहाँ से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट मेरे भाई को लेने के लिए. आई एम सो एक्साइटेड. सो व्हाटएवर यू सॉ वाज ऑल द नाश्तास दैट वी मेड. एक्चुअली ना हमारा भाई यहाँ पे कोई है नहीं, and we have all our cousins who have always been like our real brothers only. We have grown up together. So he's from New Zealand, and Bindi and I get so excited whenever we meet them. So yeah, his favorite nashta is ready. He'll come today. तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आंटा फेरा कर रहे हैं. थोड़ा सा बीच तो नहीं है, सिटी में बीच एरिया नहीं है, सेंट्रल कोस्ट में बहुत होते हैं. क्लब हम तेरा ने जो स्विमिंग कर रहा. सो गाइस हम लोग बैठे हैं यहाँ पे एंड वी जस्ट हैविंग फ्रूट्स. अभी यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, फ्रूट्स खाने का जो मज़ा आ रहा है. आई लव फ्रूट्स एंड आई रियली मिस मॉम व्हेनेवर आई एम हैविंग माय फ्रूट्स, बिकॉज when I was in school mom used to like pack for me so many fruits. It was so much fun. Anyways guys, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे है, you can see. So ये यहाँ पे ऐसे बेड सारे you can see stone. और यहाँ पे ना सिडनी एरिया में, सिटी में obviously there is no beaches and everything. और यहाँ पे लोग जंप भी कर रहे हैं. So people feel like you know chilling and swimming and stuff. So you can see सब लोग यहाँ पे पत्थर है, ऐसे बीच बना के यहाँ पे बैठे हैं. यहाँ पे इतना पैच है स्विमिंग करने का, and there is a net over here so people don't go on the deeper side or some for safety purposes. And yeah, you can see the harbour bridge from here. Shiva, are you loving it? Yes. It's good, ne? It's fun. Yeah, we like this stuff. थोड़ा सा मन कर रहा है कि मैं पानी में जाऊँ, बिकॉज इतना ठंडा यहाँ पे पानी होता है. लेकिन आई डोंट नो, माई क्लोज विल गेट वेट एंड एवरीथिंग, देन वी हैव टू गो टू द एयरपोर्ट.
एक्चुअली हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम एवरीथिंग हमारी गाड़ी में ही रखा होता है, बिकॉज हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, पानी दिख जाता है, हम लोग घुस जाते हैं पानी के अंदर। एंड या अभी देखती हूँ शिव ने करी हमारा हाल आप जाए। Guys, I'm already half in the water. मेरा ड्रेस अभी गीला हो जाएगा। पानी आ नीचे। Want to jump inside? Yes. You feel like jumping? I know. Oh my God, guys, मैं आपको बता दूं कि ये पत्थर बहुत ही स्लिपरी है। These stones, क्योंकि उसमें वो ग्रीन सेवार हो चुका है, so बहुत स्लिपरी है। Beautiful location. It's a stone beach. यहाँ पे दूर नहीं है, सब पत्थर के ऊपर बैठे हैं। गाइज अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे तरका में मैं खड़ी हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस बिना हो चुका है, सो जस्ट ड्राइंग अप हियर एंड देन आई थिंक विल नाउ गो फॉर अर्ली डिनर। बाय द वे जो भी आपने नाश्ता वाश्ता सब कुछ देखा, इफ यू वांट द फुल रेसिपीज इट्स ऑलरेडी इन माई प्रीवियस व्लॉग्स। जो दिवाली के वीडियो में मैंने फरसी पूरी वो सब, बिकॉज सम पीपल देन दे मैसेज मी फॉर फुल रेसिपीज, सो आई ऑलरेडी शोन। इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिफर or just message me, maybe I'll just tell you whatever. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंदर पार्टी चालू है, ये बोट में पार्टी चालू है। Merry Christmas guys, just heading back now, just look for some place to go and eat, probably just go to some vegan restaurant। यहाँ पे Asian restaurants बहुत अच्छे होते हैं, so yeah, we'll hopefully go there and have some light vegan snacks। Asian food ना बहुत light होता है, हमको अच्छा लगता है, so yeah, let's see where we go। I am really getting the Australian tan। यहाँ पे इतना तरका है, oh my God। Shivni, are you hungry? Yes. For some Asian food, light। यहाँ पे ना पीस हारमोनी करके एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही अच्छा है, so we'll go there। So if you're like interested in vegan restaurants or vegetarian, pure vegetarian, so you can go। दीदी और जीजू आ रहे हैं। गाइस डिनर खाने से पहले हम लोग मार्केट में आए हैं, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग, भोगा पानी लेने। एज यू ऑल नो पेरिस मार्केट में सब कुछ बहुत सस्ता अच्छा मिलता है। दीदी हमको इस वीक क्या बनाना है? यार मैं एवरी टाइम ये मडाफ को देखती हूँ ना, मुझे इतनी हंसी आती है यार, ऐसा कौन पीता है? इट्स लाइक नेचुरल मडाफ ओनली, नेचुरल कोकोनट ओनली, बट इट्स लाइक यहाँ पे ऐसे डुचका बुचका स्ट्रोबो डाल दिया है, हम लोग ऐसे पीना होता है। लुक्स आर्टिफिशियल मैन। ओह माय गॉड, ये पंखा देख लो कितना बड़ा है। fruits, boga, ready now। So guys, this is the Peace Harmony Vegetarian Thai Cuisine, जहाँ पे वीगन खाना भी मिलता है, वेजिटेरियन भी है, सब कुछ है। तो गाइस एकदम ऐसे छोटी सी क्यूट सी जगह है ये, इतना बड़ा नहीं है। ले ले। डिनर हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं। Guys, had an amazing dinner. It's just like 5:30. हाँ, it's like 5:30. Early dinner खा लिया है, but it's so nice and like this cuisine especially इतना अच्छा लगता है because there's so many vegetables, like more than the carbs like pasta and rice, and the Asian cuisine is really good। और ये वाले में तो ये लोग अनियन और गार्लिक वो भी कुछ नहीं यूज़ करते। You'll be surprised कि some vegan restaurants or vegetarian they don't use onion garlic। It's very nice and healthy and we enjoyed। अभी हम लोग these guys are laughing at me। these guys are laughing and looking at me। अभी हम लोग guys जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि मेरा भाई आ रहा है। Guys, what if Mombasa ने वाली market अभी थे या बारह दिन? सुना मैं market नो? Not Congo, where? The one in town। सुना केंगेली ने? कितना मत हुआ नो? सोमालिया। Only green market। Guys, हम लोग पहुंच चुके एयरपोर्ट एंड हिरक विल बी लैंडिंग सून। आई थिंक he's already landed, so we'll just go and take him। ये पूरा देख लो, ये कार पार्क। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी सारी पीछे आके ऐसे गिर जाएगी नीचे। So yeah, some of you may not know my cousin, and in fact some of you must have already seen him in my sister's wedding videos and his brother's wedding videos। जो भी मेरे शादी के मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं ना, आप सब ने शादी के टाइम ही देख लिए होंगे। So yeah, he will come now।
Beautiful Christmas tree at the airport. सब लोग निकल रहे हैं, हमारा भाई किधर है? Oh my god, my brother is here. Hirik is here and he's right in front of me and he doesn't know that I'm walking behind him. Hirik!